discuss the properties of aggregate in concrete. So the very first point which we have discussed yesterday was the strength. Strength of aggregate in concrete. So what happens when we are talking about the strength of aggregate? It is not dependent on on the strength of its parent rock. That means the strength of your aggregate is not equal to the strength of its parent rock, because you have crushed the rock and you have produced the aggregate by artificial or natural crushing. So there are so many factors which differentiate it from its parent rock. Okay. In fact, the aggregate strength depends on the bond between the cement and aggregate. That means the way with which the aggregate get bonds with cement and prepare a concrete. On that basis, the aggregate strength is defined. So, if the quality of paste or bond is low, a poor concrete will be produced. So here what happens, because of the poor quality of the paste or say bond, you will not be able to get or utilize the strength of aggregate. Okay, so the strength of aggregate will be found when we will prepare a good bond between aggregate and cement paste. I hope you have all understood the first property of aggregate in concrete, that is the strength. Its strength does not derive from the strength of parent rock. In fact, its strength is completely dependent on the bond of cement paste, the bond of aggregate with cement paste. So if you will prepare a bad quality of cement paste or a poor quality of concrete, then you will not receive a good strength of aggregate. So what you will have to do while preparing a concrete, while placing your concrete mix in a formwork, you need to properly compact it so that the aggregates get interlocked with each other by replacing all the air voids. In that case, you will get a good bond of cement paste with aggregate, and hence you will get the proper strength of aggregate. Let's come to the next point, that is the specific gravity. Specific gravity also influence the property of aggregate. If the specific gravity is low, that indicates the poor strength
of aggregate. Since the specific gravity is low, that leads to maximum porosity. It will absorb more water. If the specific gravity is low, that means your aggregate will be light. If it is light, that means it is porous. If it is porous or maximum porous, then it will grasp or absorb more water, and hence it will not going to give you much strength. Okay, therefore we need a good specific gravity. We need a good specific gravity of aggregate, which should be around 2.6 to 2.8. Hope you have received the point. Let's come to the next point, that is bulk density. Bulk density is nothing but the unit weight, and unit weight gives you the best information regarding shape and grading of aggregate. Now how bulk density is measured? Okay, कैसे bulk density को measure करते हैं? Bulk density is nothing but a unit weight, जिससे आपको एक shape और grading of aggregate पता चलेगी. Now how the bulk density is measured? It is usually measured by filling a container of known volume, and then will weight it. What you will do? How will you determine the bulk density? You will just need to fill a container जिसका वॉल्यूम आपको पता है, और फिर उसको आप वेट करोगे. बल्क डेंसिटी आपको बताता है कि कितना डेंसली एग्रीगेट पैक हो सकते हैं जब उसको एक स्टैंडर्ड मैनर में हम फिल्ड अप करें. क्या मतलब निकल रहा है? सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ बल्क डेंसिटी? इट इज़ द यूनिट वेट. यूनिट वेट हमको क्या बताता है? शेप एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट. कैसे इसको पता करते हैं हम? बाय फिलिंग अ कंटेनर जिसका वॉल्यूम हमको पता है, और फिर उसको हम वेट कर देते हैं. ये हमको क्या बताता है? व्हाट डज द बल्क डेंसिटी शोज़ कि हम कितना डेंसली एग्रीगेट को पैक कर सकते हैं जब उसको हम एक स्टैंडर्ड मैनर में फिल कर रहे हैं किसी भी कंटेनर में. जितनी ज़्यादा बल्क डेंसिटी मिलेगी, जितनी ज़्यादा बल्क डेंसिटी मिलेगी, क्या पता चलेगा उससे कि कितने अच्छे से आपका कंटेनर फिल्ड हो रहा है, कितना ज़्यादा, कितना डेंसली आपका कंटेनर फिल्ड हो रहा है. और जितना डेंसली आपका कंटेनर फिल्ड होगा, वॉइड्स उतने कम मिलेंगे. सो हायर द बल्क डेंसिटी, लोअर इज़ द void contents to be available. Hope you have understood the point. Let's come to the next point, that is, this is point number 4, that is porosity. Now what is porosity? Porosity is nothing but the pores available in the aggregates. The entrapped air bubble that is available, the entrapped air bubble
that is available in the rock during its formation जब रॉक बना उस समय एयर बबल्स जो इंट्रैप्ड हो गए between the rock in the rock, that leads to minute hole, or in other words we can call it as a cavities. That hole in which the air bubbles get entrapped while the formation of rock is known as a pores, and that is porosity of your aggregate. पोरस रॉक क्या करेगा? पोरस रॉक एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर अंदर चला जाता है. जब आप कंक्रीट पेस्ट बनाते हो, व्हाट हैपेंस, जब आप कंक्रीट पेस्ट बना रहे हो उसमें एग्रीगेट डाल दिया आपने. एग्रीगेट क्या करता है? कंक्रीट मिक्सचर से, कंक्रीट मिक्सचर बोलो या कंक्रीट पेस्ट बोलो, उससे ये जो पोरस रॉक है कंक्रीट पेस्ट से एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, thus रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वर्केबिलिटी. आपने क्या किया? कंक्रीट पेस्ट बनाया, उसमें आपने पानी जो है बिकॉज ऑफ पोरस रॉक क्या हो गया? वो पानी एब्जॉर्ब हो गया. कंक्रीट पेस्ट से पानी कम हो गया. पानी कम होने से वर्केबिलिटी ऑफ योर कंक्रीट पेस्ट कम हो गई, एंड इट विल लीड टू क्योंकि पानी कम हो गया तो इट विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन. आपके कंक्रीट जो बना है विच इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर एब्जॉर्ब हो गया है रॉक में, बिकॉज रॉक आपका पोरस है या एग्रीगेट आपका पोरस है. तो क्या हुआ? वर्केबिलिटी कम हो गई. वर्केबिलिटी कम होने से जब फाइनली कंक्रीट आपका सेट हो जाएगा आपको डिसइंटीग्रेशन नज़र आएगा. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पोरोसिटी. होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट. आपने सीमेंट का साउंडनेस पढ़ा है. हाउ यू डिटरमाइन द साउंडनेस ऑफ सीमेंट आपने पढ़ा है, ठीक है. लेट्स कम टू द साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट. आपने क्या पढ़ा था सीमेंट के साउंडनेस में? कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए. वॉल्यूम चेंज होगा तो इंडिकेटर्स एक्सपैंड हो जाएंगे. जब आपका सीमेंट पेस्ट का वॉल्यूम चेंज होगा तो इंडिकेटर्स एक्सपैंड हो जाएंगे. इंडिकेटर्स 10 mm से मोर एक्सपैंड होता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज एन अनसाउंड सीमेंट. ओके, सो साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट में भी हम वही चेक करेंगे. इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट to resist change in volume, due to change in its physical condition. So what are these physical conditions? किस वजह से साउंडनेस, किस वजह से वॉल्यूम चेंजेस हो सकते हैं एग्रीगेट में? वो बोल रहा है बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशंस. द फिजिकल कंडीशंस दैट अफेक्ट्स द साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट आर फ्रीजिंग टेम्परेचर. ओके, और यू कैन से variation in temperature, alternate wetting and drying. These are the conditions because of which the aggregate tries to expand itself, change the volume of itself. Okay, because of freezing temperature, intensively variation in temperature, or regularly
wetting and drying of an aggregate, it results into a slight change in the volume of itself. But when this will happen, if you will have a completely solid aggregate with no pores in it, with no cavities in it, it will hardly going to show you any volume changes. But if the aggregates which are porous, that will undergo extreme volume changes. What happens? Soundness of aggregate will be the thing that will going to be result into a porous aggregate under the physical conditions such as freezing, variation of temperature, wetting and drying. Hope you have received the point. Now let's come to the next thing, that is flakiness index test and elongation index test. Now flakiness means if the aggregate is such that its least lateral dimension, which will be the least lateral dimension, the thickness of the aggregate, it will be in the 3D view. Actually, if this is your aggregate, okay, so its first dimension is this, second dimension may be this, okay. What would be the least lateral dimension of it? That will be the thickness. So if the least dimension of an aggregate is less than okay students, let's move to another heading, that is flakiness index test and elongation index test. Actually you are having a practical over it for determining the flakiness aggregate and the elongated aggregate. Okay, first of all let's see what is a flaky aggregate. A flaky aggregate is that aggregate whose least dimension is less than 3 times its mean dimension. Means the aggregate is having its thickness as its least dimension. Okay, so if its thickness is less than 3 times the average of each and every dimension, that means the aggregate is flaky. चपटा एग्रीगेट, अगर उसकी थिकनेस बहुत ही कम है, इतनी कम है कि हम पूरे डायमेंशंस का एवरेज निकाल रहे हैं और उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहे हैं, उससे भी कम निकले, दैट इज़ नोन एज अ फ्लेकी एग्रीगेट. ओके, नाउ व्हाट इज़ एन एलोंगेटेड एग्रीगेट. एलोंगेटेड एग्रीगेट मतलब लंबा एग्रीगेट. अब एग्रीगेट को लंबा कब कहेंगे हम? जब उसका लॉन्गेस्ट डायमेंशन, द ग्रेटेस्ट डायमेंशन, लंबाई इज़ ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स उसका एवरेज डायमेंशन. होप यू हैव रिसीव्ड द पॉइंट. अगर उसकी लंबाई 3 टाइम्स से 1.8 टाइम्स से भी ज़्यादा है, अगर उसकी लंबाई 1.8 टाइम्स द एवरेज डायमेंशन से भी ज़्यादा है, then that aggregate is said to be an elongated aggregate. Hope you have understood the point. So that is all about the today's session. I hope आपके लिए पूरा क्लियर हुआ हो हर टॉपिक्स, whether it is related to the property of aggregate or whether it is a flakiness index or an elongation index. Okay, thank you for today.